Okay. Yes. तो लास्ट हमने क्या पढ़ा था? We were doing trigo, right? Yes, sir. Okay. So long one. Prove that.
Now you know the value of cos 2 theta. Yes, sir. तो यहाँ डाल लो, फिर ऊपर tan square theta की वैल्यू वो 5 में डाल लो. मतलब 2 theta you want to get rid of 2 theta now Hmm. and remove sin square 5, कट जाएगा, 0 आ जाएगा. Right, so देखो इसके अंदर आई थिंक द मेन हिंट टू मी वाज this category. Okay, so when you're Hmm. multiple of an angle,
2 theta. You are a multiple of theta, right? Yes, sir. So your aim should have been कि multiple of an angle में I have to bring a relationship between them. Hmm. So how is the angle linked to its multiple? This was a solution, right? अगर ये हो जाए, ये हो जाता थीटा टू थीटा और थीटा का लिंक, Hmm. तो ये सॉल्व हो जाता ना फिर. Yes, sir. That was the biggest. So you have to think in terms of the way you think is, do I have a situation of multiple of an angle or not? Okay, let me show you one more example, which will again give you an insight. Okay, multiple of an angle. All right, let me just, let's say, all right. This is to put in your mind something that the angle and multiple are available in the question. Then first thing you have to do is to think how are they linked to each other through some known identity. You can see the angle is this is sin x. Hmm. You see x के मल्टीपल आ रहे हैं सब 3, Yes, sir. फिर ये भी इसका मल्टीपल है, फिर ये भी इसका मल्टीपल है. So all are multiples of each other. Your aim is therefore to, और बड़ा लाना है. You have to make this as 27. A bigger multiple has to be obtained. How do you now work to get a bigger multiple? Obviously, you know, there are two rules, you know. One is sine 2x, the other is cos 2x. These are the basics, you know. Hmm. If I say this is sine of 18x, how can I write it? Agreed? Yes, sir. So which means if I have to get more multiple over and above what I have, you know, I have only two methods available to me. If I do this method in a reverse manner, I increase, and if I break it, I will get this. So for example, cos of this will break it down 18. But if you want to build it, you can build it with this reverse manner. Hmm. Now you have sin x available to you, very small. चलो ये तो है फिर भी, right? But if you notice, what do you have? For example, 9x only. ये 9 ही है सिर्फ, right? So you have to increase the values. Hmm. Maybe this will require 2 steps. Maybe this will require 1 step. God knows. But you have sine as a hint to you that sine is coming as a multiple of x. Let me Okay. just concentrate and give you a hint now. Okay. Now that we know there are two fundamental rules that govern the multiples. Okay, so I'm just concentrating on this one. Agreed? Hmm. Now, what is this actually? Sine 18x? Correct. Right? And let it be cos 27x and cos 9.
थोड़ा तो आगे बढ़े. We are able to move a bit, not too much, but थोड़ा बहुत तो बढ़ ही गए. And I have a 27 as a target. So I write this as sine of, this is sine of a minus b. Hmm. Let me expand it, and or maybe just leave it here. Okay, and if I पर मुझे तो tan 27 चाहिए ना, तो let me just write it as sine 27x cos 9x minus cos 27x sin 9x, okay, divided by 2 cos 27x cos 9x, और सेपरेट कर रहा हूँ बेसिकली, और कुछ नहीं करा मैंने. ये तो कट गए. Hmm. आई एम लेफ्ट विद, एंड इसमें कुछ कट रहा है, राइट. Correct. So now attack this and try to increase this value. मैं 9 से 27 तक पहुंच गया. इससे 9 था, और मैंने इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई पे cos 9x करा. मैं मल्टीपल में चल रहा हूँ, मैं 18 ले आया, उसको मैंने तोड़ के ऐसे लिख दिया. कैन वी डू समथिंग विद दिस कि हमारा कोई tan 9x आ जाए, वो कट ही जाए, इसके अंदर tan 9x प्लस में आ जाए और वो इसके साथ कैंसिल हो जाए, और ये तो रह ही जाएगा, ये तो कट ही नहीं रहा वैसे भी, राइट. सो Hmm. वी आर गेटिंग हाफ, राइट. सो विच मीन्स, अच्छा हमारा 2 तो था नहीं ना, ये वाला 2 नीचे, 2 ये वाला, तो पहले से मैं ले आया ये. अब दूसरे से व्हाट कैन यू यूज दिस, तो आई यूज द थर्ड वन, एग्जॉस्टेड. थर्ड आई हैव एग्जॉस्टेड. कैन यू ट्राई सेकंड एंड एग्जॉस्ट इट विद द सेम अप्रोच. इंक्रीज द वैल्यू. नीचे 9 और 3 है, मे बी यू कैन डबल इट, cos 3x करके देखो, Hmm. ट्राई इट आउट. So you're playing with the multiples of the angle. The moment you see the question, the first thing that comes to your mind is multiple of the angle.
फिर इस वाले स्टेप में cos 9x कहाँ हो गया? कौन से वाले में? इस वाले में ये, हाँ, इसमें न्यूमरेटर में cos 9x हो गया। न्यूमरेटर में कहाँ है? ये तो चेंज कर लिया ना इसको मैंने, साइन टू थीटा में मल्टीपल्स ऑफ एंगल में ले आया ना मैं। दिस इज टू साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा हो, ठीक है। तो मैं आई एम जस्ट आई हैव multiple of angle may have only two tricks. I have nothing else with me. हम्म Either I have a sine 2 theta or a cos 2 theta to make समझ गया। multiples of an angle. I have no choice but to do this. हम्म, या तो मैं किसी चीज को cos 3 मतलब 2 थीटा बनाने की कोशिश करूंगा, या किसी चीज को मैं cos 2 थीटा से लाने की कोशिश करूंगा, या sin 2 थीटा से कुछ करूंगा, और कोई समझ टैक्टिक गया। ही नहीं है मेरे पास। ओके, यू हैव कन्वर्टेड, जस्ट बी वेरी केयरफुल। अच्छा, ये ऑल्सो एक्सपेंडेड इट, खोल भी दिया उसको। ओके, हम्म हाँ देखो बढ़िया पैटर्न बन रहा है। tan 9x माइनस tan 3 है। पैटर्न सही आ रहा है ना बहुत। यस सर। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो कटने की इधर उधर से। एक हम्म लास्ट बच गया आपका। बट द वे यू लुक एट द क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन, कई क्वेश्चन के पैटर्न बड़े क्लियर हैं कि मल्टीपल्स ऑफ एंगल माने साइन टू थीटा कॉस टू थीटा की ट्रिक हमेशा पॉकेट हम्म में रखनी है। ऑलवेज कीप इट इन योर बैक पॉकेट। सॉल्व। ओके, नाउ यू आर सॉल्विंग द दिस वन।
लेंदी. हम्म, Same strategy. हम्म, Nice. सोचो, if you pay for this and you get 1 Mbps bandwidth, how do you feel? उधर Feel like beating them. जियो का कभी इंटरनेट खराब नहीं होता, लेकिन It's good. कभी नहीं गया हमारा, मतलब मोर देन ईयर हो गया. What's your speed? 150. We've also taken 150. Yeah. I had two. First, I had one Airtel, one Tata. So अच्छा. it became very stable. हम्म. तो ठीक है, अभी स्टेबल हो गया, अब ठीक है ना, फिर हटा लो. बट क्या मालूम है, जैसे स्टेबल होगा उस पे कभी खराब. गया. आ गया सर, हो गया आंसर. गुड ना. हम्म. नाइस क्वेश्चन आई थिंक. लेंदी बहुत था. लेंदी बहुत था, नो डाउट. मोर ऑफ एन एडवांस्ड देन जेई मेंस. यस जेई सर, मेंस जी में मेन्स यू में तो कैन बहुत गेट टाइम लगता है. जेई मेंस में यू कैन गेट वन पार्ट और टू हाँ. पार्ट्स की कैंसिल हो जाए. हाँ तो तो. लेकिन लेकिन बट पॉइंट ये मैं छोड़ना चाहता हूँ कि यू मस्ट हैव दिस
presence in your mind that I know multiples of an angle का भी आता है करने. I have a trick in my, I know the pattern कैसे करना होता है. हम्म. हो सकता है वो दो चीजें मिक्स करते हैं बट एक का तो you have some sense. Let's Correct. say, let's talk about the concept where you have to use allied angles. Okay, so this is the concept of questions where you have allied angles. Let me go to the other page. I think ये गया. हम्म. I'm going to the other one. Add a page. I'm on page 2. You're there? Yes, sir. Yes, you're there. Okay. So now the questions are more to do with allied angles. Okay. Allied means 90 plus theta, 90 minus theta. हम्म. Allied angles. It's like the cos of 90 minus theta. मतलब 90 180 है नहीं होते जो हाँ. 270, right? So let's try this question. It is you have to find the value of 2 cos, and I'm telling you the devil is in here. Okay, this is the type 2 you're doing. So devil is here. You know already कि इसी से करना है मुझे. Plus you have to do sine of 1000, and it's degrees. Okay, हम्म. and you have to do sine of and you, I've told you the where I'm coming from. I'm coming from all the allied, all these 180 minus theta, 180 plus theta, 270. So the hidden hint is मतलब is known to you कि ये कहाँ से आ रहा है question. This is a format which is something very close to allied angle. हम्म. Okay, so that hint is I think इधर 10th standard में पढ़ा देते हैं ये allied angles. 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वाड्रेंट हाँ. पता होता है सॉरी हम्म. फर्स्ट पढ़ा देते हैं सिर्फ बाकी तो बाद में पता चलते हैं कि कौन सा प्लस है क्या माइनस लेना है राइट a light angle is basically something which you can write it as 90 plus something 180 plus something 270 minus theta all those are allied Yes, sir. okay so that in your mind कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं कि साइन ऑफ 180 प्लस थीटा तो यू विल से ठीक है इट्स माइनस साइन थीटा राइट हम्म. नाउ यू बेसिकली आर सेइंग कि इनको अगर मैं सॉल्व करूं सम आंसर विल कम राइट इफ यू सॉल्व ऑल ऑफ देम बट आई सॉल्व इट द ट्रिक ऑफ दिस I can use a 360, I can use a 270, I can use a 180. Obviously यहाँ तो 180 यूज नहीं करोगे हम्म. और इधर यू कैन यूज 360 Correct. है ना यू कैन यूज 360 क्योंकि 720 तो खत्म हो जाएगा ना द हम्म. साइन ऑफ 720 प्लस बैलेंस कितना है 720 के बाद 280 चला जाएगा ना दिस इज साइन 2 पाई हम्म. ठीक है 280 इंटू पाई बाय 180 कर देता हूँ रेडियंस में थोड़ा दिख जाएगा Yes, sir. सो दिस विल बी व्हाट साइन ऑफ 14 बाय 9 पाई राइट ये 2 पाई हो गया हम्म. ये तो क्या है ना अलाइड एंगल मतलब प्लस थीटा साइन ऑफ 2 प्लस साइन थीटा बिकॉज इट रिपीट्स आफ्टर एवरी 2 पाई ये आ गया 14 बाय 9 पाई या 280 लिख लो मर्जी है आपकी तो ये
छोटा बन गया ना। हम्म। और इसको मैं और भी अलाइड बना सकता हूँ बाय सेइंग लेट मी राइट इट एज, इसमें क्या कष्ट है, ऐसे कर लो यार। अगेन अलाइड राइट। करेक्ट। क्या करूँ इसको मैं? व्हाई नॉट डू दिस देन? हम्म। सॉल्व दिस नाउ। दिस इज ऑल्सो एन अलाइड एंगल, ये 2 पाई के मल्टीपल में बहुत अच्छा आ जाएगा फिट। देखो 3600 तो एक बन जाएगा, एक 3600 और बन जाएगा, 36 के मल्टीपल बता रहा हूँ मैं, डिग्रीज। तो ये 20 पाई हो गया, 200 पाई भाई। 360 डिग्रीज हाउ मच? 2 पाई। तो ये दिस इज हम्म। 7200। इफ यस आई सर। डिवाइड इट by 360, how many pies do I get? 20. हम्म। So this is 20 पाई, तो एक आ गया पूरा पूरा। और कितना बचा? 2800। 2800 डिग्री बच गया ना। यस सर। तो उसको भी मैं लिख लेता हूँ। तो आई एम सेइंग राइट इट एज साइन ऑफ 3600 प्लस 3600 प्लस 3600 माइनस 800। दिस इज 10,800। So करेक्ट। this becomes sine of, ठीक है, हम्म। क्योंकि ये तो 2 पाई है ना। करेक्ट। मतलब साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। कितना ही मल्टीपल ले लो, 4 पाई, एन की वैल्यू डालते रहो, 1 2 3 6 पाई प्लस थीटा, 8 पाई प्लस थीटा से साइन थीटा ही आता है। साइन थीटा रिपीट्स आफ्टर एवरी वन वेव हो गई ना पूरी साइन की। करेक्ट। ये 2 पाई पे रिपीट हो गया, जीरो आ गया। इसको भी मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 720 प्लस थीटा, अलाइड एंगल। इट्स एन अलाइड एंगल राइट। करेक्ट। And this is because this is 2 pi, हम्म। sorry 4 pi. 2 pi is 360, 720 is 4 pi. So, इसको क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो सॉरी, this will become sine of minus 800 ना, sine of 2 pi minus theta will be equal to sine of minus theta. कितना बन गया ये? यहाँ पे भी आई थिंक वी डिड द सेम एरर। लेट्स गो टू 80 वाला, कहाँ करा था हमने? ये वाला 280 राइट। हम्म। 360 माइनस 80, तो ये कितना आना चाहिए था? माइनस कॉस 10। यू गॉट इट? साइन यस ऑफ सर। 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। हम्म। साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा? क्वाड्रेंट वाइज अगर मैं बात करूं, व्हाट क्वाड्रेंट इट इज? थोड़ा 2 पाई से कम है ना। हम्म। फर्स्ट क्वाड्रेंट 90, 2, 370, 360, maybe it is here in the fourth quadrant, should be negative। पूरा एक 2 पाई तो यहाँ से शुरू होके यहाँ खत्म होता है ना 2 पाई। हाँ। तो 2 पाई यस में सर। से थीटा थोड़ा सब्ट्रैक्ट कर दिया, हटा दिया, हम्म। तो यहीं रुकना पड़ेगा ना इस वेक्टर को, जो यहाँ से शुरू हुआ था घूमता हुआ, घूमता हुआ गया, घूमता हुआ गया, घूमता हुआ गया,
It should stop here na, because this is इतना सब्ट्रैक्ट कर लिया ना 2 पाई में से, पूरा वापस चला जाता तो 2 पाई हो जाता. तो ये कितना आ गया? तो इसका मतलब दिस इज गॉट इट. अलाइड एंगल्स सोचते ही it should raise an alarm in your mind कि यार this is something which I know. I mean, these angles are not absurd angles. They will finally come in a shape which is very recognizable because they are after all pertaining to some 90 plus minus something or 180. मैंने इसको 360 में बहुत करा देखो. I use 360 a lot in this. Okay, let's do one more. So cos square 73 plus, say you have cos square 47 minus sine square 43 plus sine square 107. You try this. I will help you to tell the value of the allied angle. मैं आपको भेज रहा हूँ allied angle की value. You can refer to that. In Telegram, you can refer to that. ठीक है? You would know क्या लेना है, plus या minus. And the main angle is theta. The allied angles are 90 minus theta, 90 plus theta, and so on and so forth. Try now with this knowledge in your hand. So you have now good understanding that I am referring to this type of questions, where you have the allied angles are somewhat away and close to 90, 180, 270 and so one allied angle is 90 minus theta, other is 90 plus theta, then it is 180 minus theta, then 180 plus theta, then 270 minus theta, and I have 270 plus theta, 360 minus theta, and 360 plus theta. Right? These are the allied angles. And then the values I have to consider are sine, cos and tan. अभी मैंने ये बहुत यूज करा. साइन को मैंने लिखा था माइनस साइन थीटा, कॉस को मैं लिख रहा था फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस वैसे ही पॉजिटिव होता है, टेन नेगेटिव होता है. मैंने अभी बहुत यूज करा है. और देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बैक टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, पूरा घूम के आए फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंट्री हो गई. सो योर एंगल स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, rotates, comes back and stops here. So this is first quadrant, right? थोड़ा सा आगे थीटा, पहले 360 plus theta. So this goes around, takes a full circle 360 plus an additional theta. So यहाँ तो ये सभी प्लस हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हो गया ये. फर्स्ट क्वाड्रेंट ये सब प्लस. Yes, sir. सेकेंड क्वाड्रेंट प्लस माइनस माइनस, second quadrant plus minus minus, third quadrant minus minus plus, third quadrant 270 से थोड़ा छोटा, थर्ड क्वाड्रेंट ही हुआ ना. थर्ड क्वाड्रेंट तो यहाँ खत्म होता है. Yes, sir. ये 90
180 270, थर्ड क्वाड्रेंट से थोड़ा छोटा, मतलब इधर थोड़ा सा, इधर 270 माइनस, यहाँ पे 270 एंगल है ना, जो यहाँ यस से सर। शुरू हुआ घूम के आया पूरा ऐसे, और 270 तक से थोड़ा सा कम उससे. Okay, so this is third quadrant again. This is fourth quadrant. 270 से आगे चले गए. हम्म फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 ही पॉजिटिव होता है. सो दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, सॉरी. अच्छा, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया. थर्ड क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव. फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस इज पॉजिटिव. ये भी बना दिए. तो ये देखने में भी दिक्कत नहीं होगी. व्हेन यू ब्रिंग देम, सारे टर्म्स को यू हैव टू कन्वर्ट इनटू दीज वन ऑफ देम, राइट. ये 73 है. अब कुछ स्टूपिड ही होगा जो 270 से पंगा लेगा, हाँ बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू 90, राइट. हम्म एंड लुक एट दिस. ये बेटर नहीं है ऐसे, ऐसे कर देना. हाँ हाँ तो करो, गिव इट अ शॉट. थिंक इट्स एन अलाइड एंगल एंड आई कैन राइट इट एज 90 प्लस समथिंग, क्योंकि छोटे छोटे एंगल है. वहां तो 10,000 थे तो मैं ये यूज कर रहा था. मेड सेंस. हम्म ये उड़ गया. नहीं समझ। क्लैरिटी होगी, ठीक है. ट्राई इट आउट. 'Where are you writing?' Okay. 17. Yes.
बढ़िया. साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा. और स्क्वायर है तो नेगेटिव पॉजिटिव का तो फर्क ही नहीं पड़ता. स्क्वायर है तो खत्म ही हो जाएगा वो. हम्म और क्वाड्रेंट भी वैसे भी कॉस पहला क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट है. थर्ड और फोर्थ में तो गई नहीं. दिस फर्स्ट वन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज साइन ऑफ 90 प्लस थीटा बिकम्स प्लस कॉस थीटा. ठीक है. हम्म लेट अस सी क्या होता है. ठीक है. दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट. दिस इज sine squared 17 if you were to write it simply, हम्म and this is sine square 43, and this is cos square 47, and this is cos square 17. ये दोनों तो वन बन गए जो बहुत अच्छा है. अब इन दोनों हम्म से डू समथिंग. आर यू डू यू नो व्हाट इज cos ऑफ 90 माइनस थीटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना. ये हम्म देखो. माइनस साइन थीटा होता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ऑल प्लस. समझ गया मैं. हाँ. दिस इज cos सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस. साइन रिमेन्स पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट. ये होते हैं रूल्स. हम्म ठीक है. दैट मीन्स यू आर लेफ्ट ओनली विद दीज टू. So I can rewrite this as sine square of 90 minus 47. यहाँ तो कुछ है ही नहीं. ठीक है. Allied angle. हम्म See it very carefully. The word allied angle. Okay. ठीक है सर. Allied angle में ये बेसिक रूल्स आने चाहिए ये वाले. ओके. नाम भी पता चल गया ना. मल्टीपल एंगल के हम्म क्वेश्चन करे मैंने. अलाइड एंगल भी करा मैंने है ना. सो लेट्स से यू हैव टू डू दिस वन मोर. लेट्स सी इफ यू आर एबल टू कैच दिस. ये बड़े क्वाड्रेंट में ले जाऊंगा मैं आपको. आई टेक यू टू अ बिगर क्वाड्रेंट. लेट्स से वी टेक यू टू quadrant which is slightly bigger, and the quadrant is, so you have to solve. I'm going to the next page again. ओके सर. Why not use that feature? I'm going to page number 3. You are all right. I'm coming back to the question. Okay, the question is allied angle. So here is a question. All right. So let's say it is sine of 300 degrees. Okay. Then it is multiply by tan of 330 degrees. It is multiply by sec of 430 degrees. Sorry, 20 degrees. Whole divided by tan of 135 sine of 210 multiply by sec of 315. As you can see,
these quadrants are large quadrants. Typically I think ये सारे के सारे 270 से ऊपर है. ये भी चौथा क्वाड्रेंट है. चौथा, दूसरा, हम्म. तीसरा, चौथा. ये वापस बैक टू वन है. 360 प्लस समथिंग, राइट? सो साइन ऑफ 360 minus theta is minus sine theta. Cos of 360 minus theta, fourth quadrant, cos remains plus. Okay, so sec भी वही इसी तरह से बिहेव करेगा और cosec भी वैसे ही बिहेव करेगा. And tan of 360 minus theta is equal to, क्योंकि दोनों को डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा ना. Correct. And cos of 360 plus theta, first quadrant, sine of 360 plus theta, first quadrant, tan of 360 plus theta, इन दोनों को डिवाइड भी कर लो तो वही आता है, first quadrant. So you're back to the first quadrant. So a light angle is known to you. A light angle is your strategy. Okay. बढ़िया. थ्री सिक्सटी प्लस 60, छोटा सा लिख दो, प्लस 60. ठीक है, एक्सलेंट. नाइन्टी प्लस 45. ये तो अच्छा है ना. 45. Hmm. वी नो द वैल्यूज. See, the small rules come very handy if you know these. Hmm. These are small, but they are very useful. It is same as cos. प्लस ही रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में. sec 60 कर दो चलेगा. ठीक है, यू कैन राइट दिस ऑल्सो, cos 60. इट इज 360 प्लस थीटा. ठीक है, चलेगा. ठीक है. वर्क्स फॉर मी.
ओके, 1/√3, 2, 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा. गुड. Whole divided by cot 45 is 1. Sin 150, 180 minus theta 30. Sin 30, 1/2. Second quadrant, sin does not change, माइनस का. ठीक है, 1/2. ये भी ऊपर चला जाएगा, 1/√2. cos 35 रूट टू हो जाएगा. √2 ऊपर जाएगा, ऊपर जाके यहाँ 1 बाय है, यहाँ 1 बाय है. अच्छा, यू ऑलरेडी डन दैट. उल्टा ओके, करके. हाँ ठीक है, फेयर. 1/√2, अग्रीड, कंप्लीटली एग्री विद यू. कट जाएगा. फिर 1/2 1 हो गया ऊपर तो. बाई टू. 2/√2 हो गया. मैं 1/√2 किया. क्या ये गया, ये भी गया, 1/1/√2 हो गया आंसर. ये दो माइनस भी गए, ये दो माइनस भी गए. √2 आंसर है. सही है, गुड है. थोड़ा थोड़ा समझ में आया. यस सर. The allied angle should is one of the strategy you have. You're not like a lost soul. You have something in your pocket to help you out. Multiples of angles. यस सर. Okay, so you don't have to be scared of certain questions which you see. Okay, okay. So let's say last question. ओके. If I'm going to the next page, ठीक है. let's take full advantage here. Let's extract full value from them. ठीक. If sin x plus cos x, okay, is given to be 1/5, find tan 2a. Does it look like a multiple angle strategy? ना लग तो रहा. हाँ, so that's a point you have in your mind, क्योंकि कुछ हाथ में टूल तो चाहिए ना सॉल्व करने के लिए. Not bad. Let us see. अच्छा, लग रहा है कि शायद इससे हो जाए. you are going to convert sin 2a, निकल जाएगा. sin 2a बन जाएगा ये. ओके, 1/25. ये 1 हो गया. sin 2 is 1 plus sin 2 is equal. ठीक है, तो -24/25. ये भी कह सकते हैं. ठीक है.
दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, यस सर। द स्मॉलेस्ट वन। फोर्थ में भी नेगेटिव ही होता है, हम्म। बट वहां तक जाए क्यों? साइन टू थीटा वाला फॉर्मूला लगा के खोल दूं सर? करो करो करो, डू इट। टैन वाला लगा देता हूँ ठीक इसमें। है। अच्छा, यू नो द फॉर्मूला डायरेक्टली? और टैन वाला फॉर्मूला तो हमने लिखा हुआ ही है। ओके। अच्छा, इसमें तो ए वाली टर्म्स में है। हमने लिखा था, हाँ, ठीक कह रहे हो। सो साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। करेक्ट। ठीक है। सो यू नो द वैल्यू ऑफ साइन 2a। सो अच्छा, यू टू फाइंड दिस ओनली, दिस व्हाट इज दिस? ये क्या होता है? ये tan 2a थोड़ी ना होता है। tan 2a is 2 tan a minus 1 upon 1 माइनस tan स्क्वायर है। या तो इसको सॉल्व करके फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a, इसकी टैन ही निकल जाएगी इससे। क्वाड्रेटिक फिर की तरह। फिर उसको टैन टू ए में पुट करके वैल्यू निकाल एग्जैक्टली exactly. तो tan a की वैल्यू आ जाएगी, उसमें डल जाएगी। ठीक दो। है। यस सर। एनी अदर मेथड दैट कम्स टू योर माइंड? मतलब डबल चाहिए ना मुझे एंगल तो, विच यस इज सर। काइंड ऑफ टफ। दिस लुक्स रीजनेबल यार। स्क्वायर करा, साइन स्क्वायर टू साइन 2 है, वन बाय टू साइन डा, so minus 1 which way sine 2a. You can also, if you know this, if you know this, so so this is right after school to college, हम्म। all positive, sine positive, tan positive, cosine positive. ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। करेक्ट। लेट्स सी, योर साइन इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, तो ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव यहाँ तो है नहीं है। थर्ड हम्म। क्वाड्रेंट ले लेते हैं। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में इफ यू हैव टू फाइंड दिस, इफ आई वर टू डू दिस, कि ये मेरा जो परपेंडिकुलर है वो ये है -24 और मेरा बेस है 25। ठीक है, ठीक है। सॉरी, माई हाइपोटेन्यूज इज 25, आई एम सॉरी। सो हाउ मच इज दिस बेस? 49 आ गया 7, which means my cos theta, cos 2a is base upon hypotenuse, हम्म। right? Base upon hypotenuse, which is थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस होगा, इस डायरेक्शन में था एक्चुअली। ओके, सो ये हो गया -25, ये हो गया -7। ओके, ठीक है। so my cos is also known to me, by the way, because I know sine, I can find its sine also, right? हम्म। And I know the quadrant because I know the negative side. नेगेटिव मीन्स पहले दो में तो साइन प्लस है, थर्ड करेक्ट। में जाके सबसे पहले नेगेटिव होता है, फिर फोर्थ में भी जाके हो जाता है। मैं थर्ड मान के चल रहा हूँ, लीस्ट जहाँ पे सबसे छोटे एंगल पे। ठीक है। तो मैंने कॉस निकाल लिया, इन दोनों को डिवाइड कर लूँ। हाँ, कर लेते हैं। 10 निकाल रहा हूँ ना मैं, हम्म। तो बेस, ठीक है, आ गया।
मुझे क्वाड्रेटिक नहीं करनी पड़ी ना, मुझे साइन मालूम यस चल सर। गया था, हाँ। और मैंने उसी क्वाड्रेंट के हिसाब से कॉस को भी नेगेटिव ही बना दिया अपने आप ही, क्योंकि मुझे हम्म। मालूम था जहाँ पे साइन नेगेटिव है यहाँ पे कॉस भी नेगेटिव होता है। तो एंगल बेसिकली यहाँ पे है, ये टू एंगल, हम्म। तो उसका बेस भी नेगेटिव है और हाइट भी नेगेटिव है। क्लैरिटी? यस मुझे सर। ये मेथड बेटर लगा कंपेयर टू दिस। इससे भी आ जाएगा, एक क्वाड्रेटिक सॉल्व करना विल बिकम अ नाइटमेयर। हम्म। नहीं, यस अगर सर। साइन 2a मालूम हो तो फिर कोशिश करनी चाहिए कि cos 2a से डिवाइड करके खत्म करें। हम्म। चलो, सी यू इन द मॉर्निंग देन, हैव अ ठीक है। गुड नाइट, टेक रेस्ट।